Yes. Now next is uses of water. अब पानी सबके पास होता है, सब देखते हो पानी आप लोग घर में, उसके कितने सारे यूजेस होते हैं. हम कुछ यूजेस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो पानी जब बात आती है तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि ड्रिंकिंग. सो द यूजेस ऑफ वाटर, फर्स्ट इज़ ड्रिंकिंग. अब पानी पी लिया हम लोगों ने, उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम. खाना खाने की बात होती है तो कुकिंग में हम कुकिंग का सोच भी नहीं सकते पानी के बिना, क्योंकि चाहे हमें रोटी बनानी है तो उसके लिए आटा गूंदने के लिए लाइक kneading the dough, washing the fruits, vegetables, cooking the vegetables, everything we need water. Next is हमें अपने आप को साफ़ सफाई करने की भी ज़रूरत है, तो बाथिंग के लिए ज़रूरत है, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए. क्लीनिंग, बहुत सारी चीज़ें हमने क्लीन करनी होती है, लाइक क्लीनिंग ऑफ utensils, cleaning of our floor, things, cars, etc. And इन द सेम वे वॉशिंग, हमें अपने क्लोथ्स धोने के लिए, बहुत सारी चीज़ें धोने के लिए, कार धोनी है तो हमें पानी चाहिए. इसके बाद इसके एक्स्ट्रा जो यूजेस आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स के लिए भी पानी चाहिए हमारे को. अगर हम पानी पौधों में नहीं डालेंगे तो पौधे सूख जाते हैं. अगेन द इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे घर को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी जगह कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो उसके लिए भी हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है. सो द यूजेस ऑफ वाटर आर कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, ड्रिंकिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांट्स एंड वॉशिंग. थैंक यू. यूजेस ऑफ वाटर. पानी हमारे किस किस काम आता है. We need water to perform many activities in our daily life. We drink water to quench our thirst, अपनी प्यास बुझाने के लिए. Animals and birds, they also need water for drinking. We need water for cooking, washing clothes, brushing teeth, bathing, watering plants, and there are many activities that we can do without water, like watching TV. We don't need water for watching TV. Eating, listening music, smelling a flower, and running. So you see, there are some activities for which we need water, and there are some activities for which we don't need water. We need water to perform different activities. Here I have written name of some activities, but some need water and others don't need water. Now we shall put the correct name under correct heading, that is the activities that need water and activities that don't need water. So first activity is walking. Do we need water for walking? No. To perform this activity we don't need water, so it will come under this heading. Now next is to grow plants. Do we need water to grow plants? Yes, we need water to grow plants because plants need water, so it will come under need water heading. Now next is playing. Do we need water for playing? No, we don't need water, so it will come this side. Drinking. Do we need water for drinking? Yes, we need water for drinking, so it will come under need water heading. Speaking. Do we need water for speaking? No, we don't need water for speaking. To perform this activity we don't need water, so it will come here. Washing. Do we need water for washing? Yes, we need water for washing, so it will come under need water heading. Reading. Do we need water to perform this activity? No, we don't need water for this activity, so it will come under don't need water. Cooking food. Do we need water for cooking food? Yes, we need water for cooking food, so it will come under need water heading. So students, to perform the activities we may need water or we may don't need water. The activities for which we need water are like to grow plants, drinking, washing, cooking food.
and on other side the activities that don't need water like walking, playing, speaking and reading.